Good morning and welcome to today's session on the world of startups, some myths and realities. As you know, the NCID is organizing a weekly 1 hour Facebook Live and YouTube Live session on innovation, entrepreneurship, and startup for IGNOU students and faculty, covering different topics of common interest. The program aims at encouraging and motivating IGNOU students towards innovation, entrepreneurship, and startup. The 20th session in this series, titled The World of Startups, Some Myths and Realities, is being organized today. When a student starts on her journey to establish a startup, it is very important to go with the full knowledge of what might she encounter on the way. A motivated innovator will be inspired by the successful entrepreneurship and entrepreneurs and would expect only good events to occur in the journey. However, it is important to know about the pitfalls on the way and the fact that innovators sometimes fail in successfully establishing their startups. Indeed, forewarned is forearmed. This is the reality of life. The belief that all innovators successfully establish their startups is a myth. And today, to bust this myth and to learn from others' mistakes and failures, we have organized this session. To deliberate on this topic, we have today's expert, Dr. Umesh Chandra Pandey. I'm happy to introduce Dr. Pandey to you. Dr. Pandey holds an MPhil in Environmental Science and PhD in Physics. Presently, he works as Senior Regional Director of Indira Gandhi National Open University at the Bhopal Regional Center. During nearly 3 decades of his professional career, he has performed several academic and administrative responsibilities in IGNOU. He also worked as Director Knowledge Management and School of Good Governance and Policy Analysis, Bhopal, India, where he significantly contributed towards the identification, compilation, and dissemination of best practices in governance. His current research interests include the open and distance learning and sustainable development. I welcome you, Dr. Pandey, to today's session. Yeah. Thank you. We also have with us Dr. Om Prakash Sharma, Director NCIDE. Before I invite Dr. Pandey, I would request Dr. Sharma to say a few words, please. Dr. Sharma. Thank you, Dr. Momita, and good morning to all of you. I also welcome Dr. Umesh Chandra Pandey ji and other faculty members from headquarters as well as regional centers and our study centers. As Dr. Momita has mentioned, today's session is very important from one point of view, NCID has been encouraging, promoting our students towards setting up their entrepreneurship and startups. But we have noticed that many of our students are having certain doubts in their mind. They need clarifications. They are many times confused with the business, normal business, and the startups, entrepreneurship. These different terms and concepts are always bothering them what to do and what are the realities behind them. So in that context, today's session on myths and related aspects, I think will clarify many of the doubts which our students are having related to their startup entrepreneurship. And Dr. Umesh Chandra Pandey is a very senior person, and he has been guiding, encouraging our students different level towards startup and entrepreneurship. So I think his session will certainly help our students in taking their ideas further and doing their business in a better way, so that is unique in nature and is contributing towards the society and the country. So with that, I again welcome Dr. Umesh Chandra Pandey ji and all the participants. Without taking much time, and I request Dr. Momita to take it further. Thank you, Dr. Sharma. Now I would like to request Dr. Pandey to kindly take today's session. The title of today's session is The World of Startups, Some Myths and Realities. Dr. Pandey, please. Yeah, thank you. Thank you very much, Dr. Momita and Director NCID, Dr. O.P. Sharma sir.
all the colleagues from NCID, my own colleagues from the Regional Center of Bhopal, and from the study centers. And first of all, I would like to congratulate NCID for taking this initiative of connecting with the students and across the country, and developing a kind of database of such knowledge base, which will be very helpful for the students, because this program, as I understand, is basically a kind of a program which has been initiated to develop a data knowledge base of such different kind of videos on our Facebook and on our website. And that's a very welcome initiative, actually, because there has rarely been any kind of initiative to connect directly with the students to seek their inputs and accordingly then make the changes at the policy level. And I'm not an expert on entrepreneurship, but my experience with all these activities has been kind of limited to organizing such activities, coordinating them, and trying to understand what kind of problems actually the students face. And on that front, I have done, along with my colleague, Dr. Anshuman Upadhyay, quite a bit of work under the guidance of NCID. And what we have been doing is that we have been seeking prior feedback. Before, we have been developing such awareness generation program. We have been taking feedback from the students on what kind of topics they would like to have guidance. And then after the programs, again, we take feedback from them. So a lot of database has been generated, which I have been communicating with the NCID. We have shared with the NCID also. And first thing which I would like to tell you is that the feedback which we get from the student is something like this. Most of them are quite interested in a startup activities. That's the first thing. That is something which leads to a lot of inquisitiveness in their mind, and they want to understand about what the startup is. And then they have so many myths in their mind, actually, which they just hear from their students, or they listen these things from the media and all. But there is no such coherent kind of understanding which can lead them on this path of entrepreneurship. And second thing is that most of the times these students think that if they get just off the cuff any idea, business idea, they immediately want to implement it and they want to seek funding. So that is again something on which they need to understand the basic intricacies of startup. This is what I understand. But one thing is very sure, that our students are very much inquisitive about doing startup ventures, and quite number of them have initiated also. And today, I think some of these students will be connecting with us through Facebook profile, and in the course of time also, when they will view these videos on the website, they will definitely write their comments. So this program, from that point of view, why I've opted for this particular topic is because I think that there's a great need of clearing out those myths which are there in the minds of the students. So I have listed out some of those points which I could understand while interacting with them, and some of those myths which I could collect through various other sources. But certainly, I think that these are very important topics. So before I start my presentation, I would like to just share my PowerPoint. Just a minute. Are you able to view? Hello? Hello? Yes, Yes, Dr. please. Pandey, yeah. Okay, fine. So the first thing is that the students should understand, what is a startup? That is something which it leads to a lot of confusion in the minds of the students, because they think that anything which they start in the name of business should be considered as a startup. That is not clear, correct. Basically, the government of India also, they have published a Startup India kit, which by the Ministry of Commerce and Industry, which defines what should be called a startup. And along with other things, what important thing is makes very clear in that document is that if any kind of business venture starts working for innovation, development, and improvement of products and services, or if it is scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation,
So this is an essential thing which all these students who are viewing this program, they should be very clear about this. This is one to make it very clear in the minds of the students that anything which happens in the name of business cannot be called a startup. So what exactly should be called a startup? First thing, and I would like to speak in mixed Hindi and English both, because most of the students who will be actually watching these videos, actually, they will be more comfortable in Hindi. That is what I understand. And quite often, I've seen that in our awareness generation programs also, the students quite often, they say that we should be speaking more in Hindi. So the first thing, the students को मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी किस चीज़ को आप स्टार्टअप कहेंगे और किस चीज को आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस कहेंगे, उस चीज के बारे में आपको क्लियर होना बहुत आवश्यक है। पहली बात, जैसे कि मैंने इसमें बताया था, जो मिनिस्ट्री का जो ये एक डॉक्यूमेंट जिसका चर्चा मैंने की थी अभी पहली स्लाइड में, जिसमें मैंने कहा था कि स्टार्टअप इंडिया किट, इसको आप पढ़ें। ये जो लिंक इसमें दिया हुआ है, आप इसको गूगल में सर्च करेंगे, आपको अवश्य मिल जाएगा। और ये बेसिक डॉक्यूमेंट है विच यू शुड रीड। एंड देन सेकेंड इज दैट कोई भी चीज को स्टार्टअप तब कहेंगे जब एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में एक टेम्पलेट विच इज मींस, जब आप समझते हैं कि कोई बिजनेस हो रहा है एक फिक्स टेम्पलेट में फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड, पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस इज नॉट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी सी इज दैट कि लोग एक जो ढर्रे में रह के अगर एक काम करते हैं, एक फिक्स टेम्पलेट में रह के कुछ काम करते हैं, तो वो एक स्टार्टअप नहीं कहा जा सकता। स्टार्टअप आप उसको कहेंगे जब आप एक दायरे से हट के कोई चीज नहीं करते हैं, अपने बिजनेस को नई ग्रोथ देने की कोशिश करते हैं, उसको ज्यादा स्केलेबल बनाने की कोशिश करते हैं, एंड देन योर बिजनेस स्टार्ट्स गियरिंग अप फॉर मोर प्रॉफिट, फॉर स्केलिंग अप, देन आप ये कह सकते हैं कि आप एक स्टार्टअप के दायरे में बात कर रहे हैं। और जो एक इनोवेशन है, वो उसका दैट इज द क्रक्स ऑफ दैट एंटायर स्कीम ऑफ थिंग। And therefore, quite often, such startups are also known in the industry as the disruptors. Disruptors means जो कि एक पुराने ढर्रे को डिसरप्ट करके बिल्कुल नया एक पैराडाइम निकाल के लेके आता है, आपके बिजनेस को ज्यादा गियर अप करता है, ज्यादा एक्सेलरेट करता है और उसको ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग बनाता है। मुझे लगता है ये बेसिक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि आपने पुराने समय में भी आपने देखा होगा कि एक कोई आदमी एक ढाबा खोल ले, ठीक है, उसका एक फिक्स टाइप का क्लाइंटेल होगा जो कि उस ढाबे के आसपास या उधर से पास होने वाले जो भी क्राउड होगा उसके लिए वो एक पॉइंट होगा वेयर दे कैन गो एंड हैव देयर फूड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दायरे से हट के आप ये देखिए, जो फूड इंडस्ट्री में जोमेटो है, स्विगी है, और रिसेंटली हमने देखा था एक प्रेजेंटेशन में पापा जपाटा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैक्सिकन चेन ऑफ फूड रेस्टोरेंट्स, या अमेरिकन कंटेक्स्ट में हम कहें ब्लू एप्रन या डिनरली, बहुत सारे हैं। मींस देयर इज सीरीज ऑफ सच स्टार्टअप्स व्हिच यू विल फाइंड ऑन द नेट, यू विल फाइंड सच केस स्टडीज, एंड व्हाट यू फाइंड इन ऑल दीस इनिशिएटिव्स इज बेसिकली जस्ट ए disruption of the schemes of the things which were traditionally happening. और तब हम एक when we look out for a bigger clientele, we take our services to them in a more innovative and more efficient way and in a more profit making way. Then obviously you are in the realm of the startup. You should be very clear on this. First thing is that your innovation is the crux of this. क्या आप इनोवेशन करते हैं, किस तरीके से आप एक दायरे से हट के बाहर आने की कोशिश करते हैं और अपने बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बनाने की कोशिश करते हैं। फिर लेकिन कई सारे लोग, अब देखिए इसमें कई सारी ना भ्रांतियां लोगों के दिमाग में बहुत सारी भरी हुई हैं, हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी। पहली बात जो कि एक आम स्टूडेंट को लगता है कि कोई भी स्टार्टअप तब सक्सेसफुल हो सकता है जब उसका आइडिया बहुत यूनिक हो। ये बात कहने में बड़ी अजीब सी लगती है, और कि यूनिकनेस ऑफ द आइडिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये एक मिथ है कहना कुछ लोगों को। लेकिन मेरा मानना है, और आप देखेंगे भी नेट पर, आप सर्च करेंगे कि यूनिकनेस ऑफ आइडिया जरूर इम्पॉर्टेंट है। ए बिजनेस आइडिया विच इज यूनिक इज सर्टेनली इम्पॉर्टेंट, बट देयर आर अदर फैक्टर्स विच आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस। There is a study done by Bill Gross, who has been a famous entrepreneur, and based on 200 plus startup ventures across the world and his own ventures, what he has found is that
the timing of your implementation of your idea is very important, and that takes precedence over everything else. Means आपके क्या एक स्टार्टअप आइडिया, जो भी आपके ये जो आपका बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आया है, उसकी टाइमिंग्स कितनी परफेक्ट हैं. He says, based on his research, that 42% in cases, the success of the startups was actually determined by the timings at which it was launched. Second is how efficiently and how well you can plan your team and the execution of your operations. That makes a 32% of contribution in the success. And uniqueness of the idea certainly is important, but it makes third level of contribution, that is only 28%. And then what is your business model? It is relatively less important. And then funding, he says, is the least important. That is the 14%. So all these things are important. I'm not saying, but a kind of myth which is there in the minds of the people is that no, this is the business idea which is the most unique business idea should be there. And you will find that there are several startup initiatives जिनके आइडियाज यूनिक नहीं थे. उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज को ही यूज किया था, बट उन्होंने उसको इतने अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया, इतने अच्छे ढंग से उसका टीम प्लानिंग की, इतने अच्छे ढंग से उन्होंने उसका बिजनेस मॉडल बनाया कि वो बहुत सक्सेसफुल हुए, बल्कि उन स्टार्टअप से भी ज्यादा सक्सेसफुल हुए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जिनकी उन्होंने कॉपी की थी. So this is something very important, and I will advise our students to watch this TED talk by Bill Gross, and you will find it on the net. Second is again I will come to few examples. जैसे मैंने कहा था कि better execution is important, perfect timings are important. I will give you a few examples. जैसे Facebook है. Facebook is an excellent example of a well-planned execution and how they actually dominated, because other players which were already there when they started it. जब Facebook स्टार्ट हुआ तो उससे पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे. जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उस वक्त, जिसको कहते हैं माई स्पेस, और जो जिसने की एक अच्छी खासी जो मार्केट थी वो माई स्पेस के पास थी. फ्रेंडस्टर था, ये बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था. लेकिन फेसबुक जब आया तो फेसबुक ने जब उसको लॉन्च किया तो क्या ऐसा हुआ कि बल्कि जो माई स्पेस, फ्रेंडस्टर जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑलमोस्ट सीन से गायब होते नजर आए, उसके बाद ऑलमोस्ट खत्म हो गए. और आज की डेट में फेसबुक एक दुनिया की एक सबसे बड़ी सोशल मीडिया के लिए एक सबसे बड़ी कंपनी है. और तो इसका कारण क्या था कि दे टुक एन आइडिया व्हिच वाज ऑलरेडी देयर, बट अल्टीमेटली they brought it to a level where they could dominate others. We will come back to Facebook case study in the next slide. And then there is similarly Google है. जब Google आया तो Google से पहले भी Yahoo या GoTo.com जैसे ये जो सर्च इंजन्स की एक मार्केट थी 98 तक में भी, और ये मार्केट एक अच्छी खासी मार्केट डोमिनेशन था इन एजेंसीज का. लेकिन गूगल ने भी सर्च इंजन्स बनाए, लेकिन और अल्टीमेटली क्या हुआ कि they could dominate all these players, and now Google is one on the top of it. And then perfect timings कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, जैसे कि Airbnb करके ये एक रेंटल एग्रीगेटर, या Uber है ये जो टैक्सी एग्रीगेटर, ये 2008 में उस समय पर आए, जबकि ऐसा नहीं था कि उससे पहले लोगों के दिमाग में आइडियाज नहीं आए, बट दे लॉन्च देम at a time when there was a dire need for the people to have some extra money and during the period of recession. And the people say that their research studies say that one of the major factor for their success, these startups, I have taken only two, that their timings was very, very perfect. Similarly, YouTube had a spectacular success because of the perfectly timed with the high broadband penetration. जब यूएस में जब broadband penetration जिस वक्त आया, जब ज्यादा था, उस वक्त YouTube उसी टाइम पर लॉन्च हुआ, और they took advantage of that high broadband availability. Similarly, but before that, YouTube it started as a dating website, but later on as a video sharing platform, it actually it was a spectacular success primarily because of the availability of the broadband at a time when actually they had launched it. And then similarly, Twitter जिस समय आया उस particular, we will come to that case study in the successive slides, and there was a time when there was a need for that kind of a social media platform. When Twitter had come, that time
we already had social media platforms like Facebook was coming up. There was already MySpace available, but Twitter also gained so much of prominence, though they did not have much of this surprising, very spectacular idea. Only a few words, kind of message you could transmit, but the timing actually and the kind of circumstances which demanded for it were such that actually it came up as a very big startup. So what I want to say here is that it's not the uniqueness of idea. It is actually how it is implemented, at what time it is implemented. They take precedence over the uniqueness of the idea. Then next is, let's look at what the Facebook actually did. And it is very interesting case study, and you can view it on the website. One thing again, I would like to suggest the students who will be viewing this video on the Facebook, I would like to just tell them that they should watch certain videos. There are certain very big entrepreneurs, successful entrepreneurs, and they have very well prepared videos available on the website. I have also referred to them when I actually was preparing this PowerPoint presentation. And Ankur Wariku is one such very good entrepreneur and a well established entrepreneur. And though he was earlier a researcher, a physicist, he was doing his PhD in astrophysics, but then he came back to India and he leaving his PhD in between. And then when he came to India after that, he ventured into this startup business. And now he is one of the most accomplished entrepreneur. So what I want to say, and I will tell you in successive slides also, that it is not necessary for you to be a very well qualified entrepreneur, means person, in order to start a startup. So there are several such persons who have altogether different kind of backgrounds, but they ventured into startup business and they were successful. So, okay, leave it. Now coming back to this Facebook thing. So you should watch the videos prepared by Ankur Wariku. This is what I was telling you. So about the Facebook, these three important things which I could make out. The first thing is that the favorable timings of the launch of Facebook. Second is that the well-planned execution. And third is the business model. This study I have taken from this Ankur Wariku's video also. And the first thing is, which I would like to point out, is that the broadband availability and the increasingly diverse audience, which was available for Facebook at the time of its launch, was very much favorable. Had it not, they have not launched it at that point of time, obviously that success would not have been to that level. Then experience of early social networks, because as I said that when Facebook came into existence, that time already there were Facebook, other social media platforms. So kind of mistakes they had done or the kind of experience they had, so they could take benefit of their experience and accordingly devise their social media platforms. That is something very important. And that is something which takes us to a conclusion that if you already have players available in the market who are doing similar things which you want to do, so obviously it goes to your advantage, because you can take benefit of their experiences, their successes and their failures. You can take benefit of it and accordingly design your platform. That is a kind of a benefit which went to the Facebook also. And third is a long list of technical and business mistakes which other player had made, so they do not do it. Already very conditioned kind of consumers were available who were kind of conditioned to using social media platforms, so that was available. This and the experience and that benefit also went to the Facebook founders. Second is that that was a very well planned execution. फेसबुक के जो जिन मार्क जकरबर्ग और उनके जो और फ्रेंड्स थे, इन्होंने इनकी जो टीम थी एक छोटी टीम थी और इनको डिसीजन लेना भी इनके लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान था, जो बल्कि उस जमाने में माई स्पेस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था और इसको किसी बड़े बिजनेस हाउस ने खरीद भी लिया था उस वक्त, और वो जिस एक टाइप के फ्रेमवर्क में काम कर रहे थे उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाज वेरी ब्यूरोक्रेटिक. And but what they did, they took advantage of that weakness of their competitor, and they planned it so well. They are a small team, and taking decision was not very difficult for them. So this is what goes to the advantage, went to the advantage of them.
And then a third is that the kind of the business model which they actually developed, Facebook through advertisements and all, and they suitably, combined it with the advertisements and things like that, so that they could earn the business also. What here we see here in this graph is that आप देखिए कि MySpace जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उसकी उसके जो यूजर्स की संख्या थी वो किस तरीके से थोड़ा थोड़ा बढ़ी थी, एंड इट वेंट टू समथिंग लाइक 10 millions. And after that, as Facebook started coming up, and Facebook came up around 2007, and immediately जो MySpace के जो यूजर्स की संख्या एकदम से ड्रास्टिकली कम होती रही, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई और खत्म हो गई. लेकिन फेसबुक ऑलमोस्ट बिलियन उसकी जो कितने साल के अंतराल में ये पहुंच गई, आप देखिए कि ऑलमोस्ट 10 साल के अंतराल में तो ये कई बिलियंस पहुंच गई. तो that is how it happened. So the same kind of strategy which others were already, same social media activity which others platforms are doing, they were much more economically also very well off, and but they were not successful to the extent the Facebook was. Okay. The second is that as Apple also, this case study is a very iconic case study of Apple, and you must view it. And on the Think School, on this platform, this Ganesh Prasad, one who has developed so many videos on the website. They are there on the website, and you must see this video. And there are several other videos which are there. So about Apple, let us see what happened in 2007 and what happened in 2015. In 2007, there were five major mobile phone manufacturers like the Nokia, Motorola, Samsung, Ericsson, and LG, and they captured around 90% of the industry's global profits, whereas this Apple market share was almost negligible, and it was almost nil. But what Apple did was, in 2007, instead of actually focusing on the sale and purchase of their mobiles, what they did was they went on to launch its iPhone, and it also launched its App Store. And this platform-driven approach means instead of just developing the mobiles, what they did was they created a platform-driven approach, and which actually led to a network effect of linking with a larger clientele, and giving rise to increase the adoption of the Apple iPhone. And this is how, just by way of doing a little bit of different execution of their idea, though they also developed this mobile, but with a different kind of approach, different kind of execution of that idea. And in 2015, what we see here is that Apple had captured around 92% of the global profits, and other companies had almost died out, and while only Samsung of the four industry giants of 2007 survived. So what we see here is that those five companies, since they've had focused on only creating a product and selling it to the market, what Apple did was focusing on developing a platform for a small scale developers to thrive. So this is how doing the same thing but in a different way. So that is what we makes us understand that how important is the execution part of the entire things which we are trying to do. Similarly, Twitter, and you must see this view it on the website. I have given a link here of the Think School, a very beautiful video which has been prepared, which is there on the website. Just see, just when Twitter came into existence, that time Facebook and MySpace were already there. Facebook was picking up. MySpace was already a dominant kind of agency, a role player already available. But Facebook, as we see it today also, that it was a kind of Facebook, a social media platform which had become kind of becoming too much cluttered and generalized kind of. And second is, at that point of time, the people were actually the Silicon Valley players in Silicon Valley, those who were developing their startups, and those
who were the funding agencies, means the investors, there was kind of a link between them. Means the investors wanted to see the promising startups available which are coming up, and the startups were looking for the investors, and there was no such mechanism through which they could connect with each other. And the only way for them to connect with each other was the media agencies through, but media agencies had their own kind of agenda. Obviously, uh, uh, only those kind of case studies were coming to the media notice, which were serving their own purpose. Obviously, as you can understand, that media has its own kind of a mandate. So therefore, investors were very much no, in a problem, because they were not finding good startups whom they can support financially, and the good startups were not finding. There was no link between them. And at that point of time, what happened was Twitter came into existence. They did not do something very big. The only thing is that is means linking the people, linking these startup founders with the investors, a mechanism they created. And that mechanism became so powerful that many political people like the Barack Obama also used it in his election campaign, and that's why it all of a sudden it came into prominence. And similarly, during the time of crisis, this people used it for giving information to about the natural disasters also. So like this, immediately people found that this is sending just a small kind of a message in which to through Twitter can become such a powerful mean of developing a business. Though, so what we understand from this case study is that your social, what they found, Twitter found that the existing social media platforms are very much cluttered, and people don't want to use that much of a cluttered space, and therefore they found it very interesting to utilize this small messaging through the Twitter, very much useful for them. So what we find here is that small messages could serve such a big purpose, and therefore this within the same market in which already social media platforms were so popular, Twitter could find an easy way of sensing the people's requirement and responding to it. And that is the reason why it became so popular. What we see here is that Twitter could sense a micro level requirement of the people and capitalize on it. So that is what is important in doing business, in doing startups, that you can take any idea from the already existing ideas in the market, but try to use them in such a way that they can be profitable for you. They can serve the micro level requirements of the people. So sensing the requirements of the people takes precedence over just generating the ideas. So your approach should be to find out big problems. Your approach should be to find out the big problems and find out how these problems can be solved through already existing ideas also. So uniqueness of the idea is not that important. What is important is that you pick up any idea and utilize it to solve any new kind of a problem which you can identify. So look for great problems, look for big problems, and see how already existing ideas or any other unique idea can serve its purpose. Similarly, Google, and when it came into existence, as I said, that Yahoo and GoTo.com were already there in the business. But Google, through its innovative strategies of doing business, they could sense the micro level requirements of this customer, and ultimately they could develop such a big business empire. And other players which were doing the same thing, they died out with time. So the message which we get here is that when we are trying to develop a startup, we should first focus on finding out problems. Just see where are the problems and how those problems can be then addressed. So not starting just off the cuff, looking for ideas and then trying to implement them, but trying to first find out great problems and then trying to address them through ideas.
So idea comes a little later. First thing is that your competence to look for ideas, your how tactfully you can view the problems, and then devise ideas. So that is what I wanted to say. Second is, and the second myth, which is quite often, is that any big competitor can drive you out of business. That is quite often people think that कोई भी बड़ा, हम तो बहुत छोटे से स्टार्टअप करेंगे, लोग तो बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में हैं, तो किस तरीके से हाउ वी विल डू इट, एंड वी और मोस्ट ऑफ द पीपल से इट दैट यू नहीं बड़ा कोई प्लेयर आएगा, इतना बड़ा काम तो हम नहीं कर सकते, एंड हाउ एक्चुअली वी विल डू इट, वी कैन नॉट कम्पीट विद देम. दिस इज एब्सोल्युटली a myth. It cannot happen because we have such experiences. For instance, मैं आपको ये बताऊं, अभी कुछ देर पहले जब फेसबुक के बारे में हम बात कर रहे थे, जब फेसबुक आया, इन लोगों ने इतना सारा फंडिंग नहीं, जब माई स्पेस वॉज ए वेरी जाइजेंटिक प्लेयर ऑलरेडी अवेलेबल, बट व्हाट हैपेंड वाज माई स्पेस को फेसबुक ने इमीडिएटली डोमिनेट कर दिया. मैंने बताया कि कैसे बिलियंस ऑफ उनके यूजर्स हो गए, और जबकि वो उनके स्टार्टिंग में, जबकि उन्होंने माई स्पेस ऑलमोस्ट अपने पीक पर था तब उन्होंने स्टार्ट किया. तो इसी तरीके से बहुत ब्यूटीफुल केस स्टडी है, दैट इज अबाउट द ईबे वर्सेस अलीबाबा कंपनी का जो है. जो ईबे एक अमेरिकन एक ई कॉमर्स कंपनी थी जो कि चाइना में अपनी एंट्री करी थी. व्हेन चाइना हैड ओपनड अप इट्स मार्केट फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, एंड दैट टाइम eBay decided to venture into Chinese market, and Alibaba was a small company. Alibaba, Jack Ma जो उसका founder था, he was an English professor and he did not have any kind of a computer background also, but he was trying to set up his own company there, but that was mostly confined to China only. eBay was एक international एक कंपनी थी, और लेकिन जब वो चाइनीज मार्केट में उन्होंने एंटर किया, उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने चाइना की सारी जो पूरी कंडीशंस को स्टडी किया. उन्होंने देखा कि चाइना में लोग एक चीज क्या करते हैं कि चाइना में लोग बार्गेनिंग बहुत करते हैं. उनकी जो मार्केट्स होती हैं वो बहुत ही मैसी टाइप की होती हैं, और क्या कहते हैं, हमेशा उतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी ध्यान नहीं देते. उन्होंने सोचा कि नहीं, हम लोगों को एक ऐसा ऑप्शन देंगे कि जो which will be a well designed option, और उसमें बार्गेनिंग का कोई प्रपोजल नहीं होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे. और ज्यादातर जो चाइनीज कंपनीज की जो वेबसाइट्स भी होती थी वो भी बहुत मेसी टाइप की होती थी. उसमें आप बहुत इजीली आप उसमें से कुछ यू कैन नॉट मेक आउट एनीथिंग आउट ऑफ इट. इस टाइप का उनका बिजनेस का एनवायरनमेंट था. बट ईबे ने उसको एक बहुत अच्छी सबसे पहले वेबसाइट तैयार की. उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोगों को बार्गेनिंग के इस ये चंगुल से बाहर निकालेंगे और हमारे को बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी. उनको एक प्रोफेशनली डेवलप एक बढ़िया वेबसाइट बनाई, और उसमें एक चीज उन्होंने कहा कि देयर विल नॉट बी एनी बार्गेनिंग, और प्रोडक्ट्स के कोई क्वालिटी पर मेन फोकस किया. लेकिन जब जैक मा को पता लगा, ने इसको काउंटर करने के लिए उसने अपने लोगों को कहा, देखिए, अगर इफ दिस इज व्हाट द ईबे is doing, what we will do is हम ये करेंगे कि हम अपनी, उसने डायमेट्रिकली अपोजिट अपनी वेबसाइट्स को कैसा बनाया, बहुत ही मेसी टाइप का बनाया. उनका नहीं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें बार्गेनिंग का प्रोविजन कंपल्सरीली रखो. तो मींस व्हाट ही डिड वाज he knew, because Jack Ma knew that चाइना के जो लोग हैं उन्होंने मार्केट को उसी तरीके से देखा है हमेशा, और जो वो हमेशा बार्गेनिंग के लिए ही जाएंगे. अगर बार्गेनिंग किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होगी तो वो बार्गेनिंग नहीं होगी, तो दे विल नॉट गो देयर. सो this is what I am saying, that Alibaba.com, since it was a local player available, and he said also at that point of time that eBay may be a shark in the ocean, but I am a crocodile in the Yangtze River. Means he said that I am a small player, but I can understand the psyche of the Chinese customers, and which eBay possibly did not understand. And this is what happened, that eBay turned out to be a big failure. Alibaba.com, and during that point of time, it came up as a very big player, and eBay ultimately had to wind up its business from the China. What I want to say here is that you can always devise your your strategies in such a way that you can counter big players. It is all about your strategic planning. It is all about your business planning. It is business strategies. बिग प्लेयर्स अगर हो भी, अगर कोई कंपनी अगर सारी दुनिया में भी रूल करती है, और अगर आप मध्य प्रदेश में अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है. आपको
ये इस चीज पर भरोसा होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की आवश्यकताओं को हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं, जो कि इंटरनेशनल कंपनीज नहीं समझेंगी। उसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ योर कस्टमर्स, अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर and devising and designing the suitable strategies to serve them is ultimately the main thing for the success of the business. This is what the eBay versus Alibaba company का case study पढ़िए आप, उसको you will find it very much interesting. MySpace versus Facebook मैंने आपको बताया था, how Facebook with the help of suitable planning, timely taking decisions and business model, they could overpower this MySpace, and ultimately MySpace had to MySpace died out from the market. And third is like the Apple versus, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, ये भी जो एप्पल ने इतने सारी बड़ी मार्केट को, जो कि 90% शेयर जो होल्ड कर रहे थे पूरे मार्केट का, उसको काउंटर करके इट केम अप एज अ वेरी बिग प्लेयर विद इन ऑलमोस्ट almost 7-8 years of time, almost 10 years of time, you can say. And then this is what I want to make, that is a myth. देखिए एक छोटा प्लेयर है तो कुछ नहीं कर सकता, छोटा प्लेयर भी बहुत कुछ कर सकता है. They have to plan out their things in such a way. And then third is the myth number 3, which is there, is that designers know better than the users. फिर वही बात में पहले वो ईबे और अलीबाबा वाली केस स्टडी को थोड़ा सा फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ईबे कंपनी ने सोचा कि नहीं, हम लोग डिजाइन करेंगे स्ट्रेटेजीज को, हम लोग तो यूजर से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं. ऑलमोस्ट यही था उनका जो पूरा बिजनेस आइडिया का जो क्रक्स था. सो दे विदाउट कंसल्टिंग द वाइडर, without sensing the pulse of the Chinese market, without understanding the psychology of the Chinese people, they did something and which did not lead to the success. Alibaba, on the other hand, had that understanding of the pulse of the Chinese market, to understanding of how they think and understanding their psychology. So accordingly, they devised, though diametrically opposite strategy of what eBay did, but it turned out to be such a big success. And so second is about the Nokias, and Nokia also did not change much, and ultimately you have seen the fate of Nokia. Is that basically they did not focus on on the software, and ultimately what they did was they focused on the hardware. And that was a strategic planning, which possibly they thought that we being the designers can know everything, and possibly there is no need to understand users. And that is, there are several reasons for the failure of the Nokia, but these two major reasons are there, which actually make us think that we should not get into a feeling that the designers of a business strategy in a way know better than users. वो कभी नहीं सोचना है इनको. ये एक मिथ है कि हम लोग खुद डिजाइन कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे और उसके बाद लोग खुद हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ जाएंगे. ऐसा नहीं. फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स. Your engagement with the customer should be the first step, and your engagement with them to find out what is their problem should be our first step. And then इसी तरीके से ये जैसे है कोडक कैमरा, उसने भी अपना डिजिटल कैमरा, जो अब देखिए उनका जो है डिजिटल कैमरा जब लेट 80s में शुरू हो गए थे पॉपुलर होना, लेकिन कोडक ने कब किया, 91 में अपना पहला डिजिटल कैमरा बनाया. तो obviously they could have designed it much earlier. So timely not taking action again goes to the disadvantage. और मैं इन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये उनके उन्हीं फेजेस के बारे में बता रहा हूँ जब वो स्टार्टअप्स थे. उसके बाद वो बड़ी कंपनीज बाद में बने, बट ऑल ऑफ देम एक्चुअली स्टार्टेड एज स्टार्टअप्स ओनली. फिर आप देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक मिथ है, वो है स्टार्टअप्स रिक्वायर टू मच ऑफ मनी. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नहीं साहब, जैसे ही कोई भी पहले बात तो कहीं से किसी ने आइडिया दे दिया, तो वो आइडिया से ही उनकी बात शुरू हो जाती है. वो कहते हैं कि नहीं कोई बिजनेस आइडिया दे दो. कोई आदमी कहता है किसी को कोई बिजनेस आइडिया दे दो, या कोई आदमी किसी को कहते हुए नजर आएगा मेरे तो आपको बताने के लिए $1 मिलियन बिजनेस आइडिया है. सो मतलब आइडिया पर ही उनका फोकस रहता है, एंड दे डोंट गो डीपर इनटू हाउ एक्चुअली इट इज इम्प्लीमेंटेड. और दूसरी चीज उनके दिमाग में आती है, आमतौर पे मैंने देखा है कि पैसा कहां से आएगा, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है. बिल्कुल गलत बात है. जो मेन चीज है मैं आपको बताऊं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है
जैसे कि जेरोडा की जो केस स्टडी है, उन्होंने अपना with no advertisements, with no marketing, and without any investment, they could develop such a beautiful startup. और दूसरी बात यह है कि जो प्लेंटी ऑफ फिश करके जो एक डेटिंग वेबसाइट थी, इसकी केस स्टडी भी आप पढ़िएगा। इन्होंने कोई वेंचर कैपिटल फंडिंग उनको मिल रही थी तो भी नहीं ली, और उसके अलावा एज ए साइड प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था इसको, और एक ह्यूजली प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में बदल दिया, और अल्टीमेटली इसको उन्होंने किसी ने एक्वायर कर लिया $575 मिलियन में। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा बिजनेस वेंचर जो कि उन्होंने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, ऑलमोस्ट निल इन्वेस्टमेंट के साथ में, दिस इज व्हाट ही हैड सेड इन वन ऑफ हिज इंटरव्यू व्हिच आई वाज सीइंग ऑन द वेबसाइट, Plenty of Fish, a dating website. It was just he was not even expecting that it will draw so much of a response from the public. He had done it just like a side project. So what I want to make, point which I want to make is that जो एक आम धारणा इन लोगों के दिमाग में है कि नहीं साहब स्टार्टअप तभी शुरू हो सकता है जब बहुत पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं है। बूट स्ट्रैपिंग करके मैंने वर्ड यूज किया है, दैट इज बेसिकली मेथड व्हिच यू कैन यूज। आप शुरुआत से ही अपने ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स को कम करके आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना सकते हो। एक ये वेब लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है जिसमें करीब 50 ऐसे स्टार्टअप्स की लिस्ट है जिन्होंने केवल बूट स्ट्रैप्ड मेथड यूज करके अपने बिजनेस को सक्सेस में पहुंचा दिया विदाउट एनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इस धारणा से भी बाहर निकलने की जरूरत है कि नहीं साहब पैसा जब आएगा तब काम शुरू होगा, ऐसा गलत है। आप एक बड़ा स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, और उसको कम पैसे में या ऑलमोस्ट नील पैसे में उसको अच्छे आइडिया से शुरू कर सकते हो। मैं ये नील पैसा भी इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि प्लेंटी ऑफ फिश, उसको आप पढ़िएगा कि कैसे ही डिड इट। अच्छा, दूसरा ये कि अब अक्सर लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि क्या कहते हैं कि आपके पास कोई को फाउंडर होना जरूरी है, और अक्सर ये देखा जाता है आप किसी के पास फंडिंग लेने जाएंगे, वो भी आपको आमतौर पे यही कहेगा कि आपका कोई को फाउंडर है या नहीं, आप अकेले जाइए कि ये तो वो कहेंगे नहीं, आप को फाउंडर तो होने चाहिए। दूसरा आमतौर पे लोग ये भी कहते नहीं है कि बिजनेस शुरू करना है तो को फाउंडर तो कोई दोस्त ही होना चाहिए। तो ये एक बड़ी मिस है जो कि एक तरीके से रियलिटी नहीं है। ये कि पहली बात तो ये है कि एक अंकुर वारिक जिसका नाम मैंने लिया था आपको, उनका वीडियो पढ़िएगा, देखिएगा, और उसमें उन्होंने एक बड़े अच्छे से स्टडी की और उसका रेफरेंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 10 मिलियन फंडिंग रेज करने वाले कुछ स्टार्टअप्स को उन्होंने लिस्ट किया, कई सारे स्टार्टअप्स को, और उन्होंने देखा कि उनमें से कि कितने लोगों के पास फाउंडर्स थे, को फाउंडर्स थे। तो उसने देखा 57% तो ऐसे थे कि जो अकेले थे, दे डिड नॉट हैव एनी को फाउंडर। 50 मिलियन फंडिंग रेज करने वाले स्टार्टअप जिनको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कहा जा सकता है, 57% उसमें बिना को फाउंडर वाले थे। 33% ऐसे थे जिसमें दो फाउंडर थे, मतलब एक को फाउंडर था, ओनली वन। तो कहने का मतलब कि एक या दो फाउंडर्स के साथ में जो कंपनीज थी, करीब 90% ऐसी कंपनीज थी, ओनली 10% ऐसी थी जिसमें कि 2 से ज्यादा फाउंडर्स थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये सोचना कि हम जब भी कोई बिजनेस करेंगे तो हमारे साथ कुछ लोग को फाउंडर्स की टीम होनी चाहिए, जरूरी नहीं। ये एक टाइप की मिथ है जो कि इन्वेस्टर्स के भी दिमाग में है, और वो जो हमारे स्टार्टअप फाउंडर्स के भी दिमाग में रहता है, नहीं कि शुरू करेंगे तो कुछ साथ में हो। आप अकेले रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे 57% तो वन फाउंडर वाले, उनको 10 मिलियन अपनी फंडिंग रेज कर पाए वो लोग। अब उसके अलावा कुछ और देखिए कि डज द को फाउंडर आपको क्या, तो फिर को फाउंडर अगर आप लेते हैं, ये मेरा कहना ये नहीं है कि आप को फाउंडर मत लीजिए, को फाउंडर लीजिए इफ यू थिंक सो, बट नॉट नेसेसरीली इट इज इंपॉर्टेंट। एंड देन ये अंकुर वारिक का एक उसने थोड़ा सा मॉडल बनाया, एंड उसने जस्ट एक ये बताया कि अगर आपके पास कब आपको को फाउंडर लेने की जरूरत है, कब आपको को फाउंडर लेने की जरूरत है। दिस इज व्हाट ही हैज डन इन अ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज हिज मॉडल ओनली, एंड व्हाट ही हैज सेड हियर इज दैट, आप देखिए नीचे आपने लिखा है कि कोर स्किल उन्होंने लिखा है, मैंने उनके वीडियो से इसको यहाँ पर पेश किया है, कोर स्किल्स, और ऊपर लिखा है वाई एक्सिस में कंट्रोलिंग फैक्टर। कहने का मतलब दो चीजें हैं। आप ये देखिए कि क्या मेरे पास कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मेरा स्टार्टअप है उसकी कोर स्किल मेरे पास है या नहीं है। आप ये देखिए, पहली चीज जो आपको देखने की है, कोर स्किल कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे
अगर आप एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो क्या आप कंप्यूटर की कोडिंग जानते हैं, या आप बेसिक आपको टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है। आप कोई इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस आप क्रिएटिव हैं या नहीं, आप क्रिएटिव उतने नहीं हैं, या इसी टाइप की चीजें। आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का करना चाहते हैं तो क्या आप उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको ग्राफिक डिजाइनिंग की आपकी या नहीं। तो इस टाइप की चीजें, तो जो भी आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उसकी कोर स्किल आपके पास है या नहीं है, पहली चीज ये सोचिए। दूसरी चीज, क्या आप कंट्रोलिंग करना आपको अच्छा लगता है अपनी टीम को या नहीं लगता। अगर आपको चाहते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम पूरी टीम को कंट्रोल करके रखें, और दूसरे चाहते हैं कि नहीं, हम ज्यादा ज्यादा चीजें डेलीगेट करें, लोगों के ऊपर में छोड़ दें। तो अगर आप ये कंट्रोल करने वाली टेंडेंसी आपकी यस है या नो है, वो वर्टिकल एक्सिस में मैंने दिखा हुआ, हॉरिजॉन्टल में लिखा है कि कोर स्किल है या नहीं। अब आपका इसमें असल 4 क्वाड्रेंट आपके पास हो गए। अब आप ये देखिए कि अगर आपके पास ये देखिए कोर स्किल किसी चीज की है, और सबसे राइट साइड में ऊपर वाला क्वाड्रेंट कोर स्किल है, लेकिन आप कंट्रोलिंग करना भी आपको ज्यादा अच्छा लगता है टीम को, तो दोनों यस और यस हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको किसी भी को फाउंडर की जरूरत नहीं है। आप अकेले शुरू करें ऐसा बिजनेस जिसकी कोर स्किल्स भी आप जानते हैं और जिसकी आप कंट्रोल, आप एडमिनिस्ट्रेटिव भी जो भी आप चीजों को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। दूसरी चीज उसी में जो नीचे वाला जो क्वाड्रेंट है उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसमें आप अगर ये आप सोचिए इन चीजों को मेरे को कंट्रोल करना तो अच्छा नहीं लगता, लोगों की आदत होती है कि ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट करें, और लेकिन आपके पास कोर स्किल है। अगर आपके पास कोर स्किल है बट यू डोंट वांट टू कंट्रोल द थिंग्स, तो यू शुड हैव वन, बट इट इज नॉट मैंडेटरी इन दैट केस, क्योंकि आप कोर स्किल्स आपके पास हैं, आप चाहें तो आप लें, बट इट इज नॉट मैंडेटरी को फाउंडर लेने के लिए। फिर आप इसमें नीचे लोअर वाले में साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वाड्रेंट में आ जाएं, तो वहां पर आप देखिए कि आपको कंट्रोलिंग करना आप नहीं चाहते अपनी टीम को, लेकिन कोर स्किल भी आपके पास नहीं। ऐसे केस में ना आप एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं और ना आपके पास कोर स्किल है, ऐसे केस में को फाउंडर लेना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। आपको को फाउंडर चाहिए ही चाहिए। और इसी में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऊपर वाला, अगर हम इसमें हम देखें तो इसमें क्या है कि आपके पास कंट्रोल करने की तो आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है अपनी टीम को, लेकिन जो कोर स्किल आपके पास नहीं है। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको, इट इज नॉट सजेस्टेड, बट आप उसमें एक ऐसा अपना पर्सन एम्प्लॉय कर सकते हैं जिसके पास कोर स्किल हो और जो आपके बिहाफ में काम कर सके। तो जो कोर स्किल जिसके पास हो, तो ऐसा एक एम्प्लॉय आप अपने पास रख सकते हैं। So this is what his model is. What I want to say through this particular slide is that you always need a co-founder and your friends can be your best co-founders। ये एक मिथ गलत है, और क्योंकि बल्कि फ्रेंड्स के साथ में तो आपका एक co-founder होना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि then obviously it will be hard for you to adjust your friendship with the professional requirements of your workplace, and then obviously you will be will have so many other clashes which will be hard for you to manage. But not necessarily, you can have any of your friends if you so like, but then it is, you need to handle it very carefully. In that case, chances are that in those cases where I personally feel that if your friends are your co-founders, it will be little harder for you to handle such a situation and make it a very professional exercise. Now again, the second next myth is that you need to be a technical founder to succeed. As I said, ये अब ये टेक्निकल होना आपको बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले वाले में बताया, जरूरी नहीं है आपको टेक्निकल फाउंडर होना। 50.5% of the founders of the CEO of the billion-dollar startups were non-technical. For example, Alibaba.com, मैंने बताया, he was an English professor, but he developed such a big empire of this online business, internet business. And second myth is that if initial idea does not work, the startup fails. Quite people think that नहीं, शुरू में हमने आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, स्टार्टअप फेल हो गया, ये तो हमारा बिजनेस फेल हो गया। और नो,
what you need is that आपका आइडिया इंप्लीमेंट करने की प्रोसेस में if you get into losses, doesn't matter, you need to suitably realign it with the circumstances. You can always change the direction of your business, and this is quite normal in doing startup business. So 90% of the startup businesses failed in the first few years. This is what the reality is. And as these things which I have listed out here, is that YouTube actually started as a video dating site. Swiggy was initially established as an e-commerce website. There are so many. The Facebook started as a fresh mouse, like this. There are several other successful startups which started initially with a different kind of purpose. They had to actually change their direction. That is quite normal in doing business. Don't think that if your business initial stage fails, then your business, there is no hope. It's a myth. And entrepreneurs are their own bosses. Quite often people think that अपना काम करो, हम अपने काम में तो अपने बॉस खुद होंगे. नहीं, गलत बात है. रियलिटी ये है कि एज ए एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, एज ए स्टार्टअप फाउंडर ऑल्सो, यू हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फर्स्ट इज दैट you have a responsibility towards the investors if they are spending money on your startup. Second is that for your own customers, आप अपने कस्टमर्स जो आपकी टीम है उनके लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी है, और ये एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि ना केवल आप उनके लिए, वो आपको हमेशा देखते रहेंगे कि आपके कस्टमर्स की आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. दे आर द किंग्स ऑफ द मार्केट. एंड थर्ड इज अबाउट योर एम्प्लॉइज एंड और एम्प्लॉइज के फैमिलीज के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अपना काम शुरू कर रहे हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपना काम के तो अपना काम के में राजा की तरह है हम. ऐसा नहीं है. आपकी जिम्मेदारियां काफी हैं, और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिएगा. तो ये एक कोई सिंपल स्मूथ सेलिंग नहीं होगी कोई भी एंटरप्रेन्योर बनना और स्टार्टअप बनाना. फिर उसके बाद ये स्टार्टअप्स आर इजी, जैसे कि इसी मिथ में भी लगा, लोग कहते नहीं स्टार्टअप्स आर इजी. नहीं, आप ये इस केस स्टडीज देखिए, नेटफ्लिक्स की केस स्टडी देखिए, आप इसका वीडियो आपको मिलेंगे, ये मैंने यहाँ पर इसके लिंक्स दिए हुए हैं. आप ये देखिए अमेरिकन ये कंपनी किस तरीके से अप्स एंड डाउन से गुजरी और किस तरीके से अपनी मार्केट में अपनी वैल्यू बना के रखी है, और आज की डेट में फिर एक सबसे बड़ा क्राइसिस फेस कर रही है. तो आप ये सोचिए कि नेटफ्लिक्स की केस स्टडी आपको बहुत कुछ चीजें बताएगी कि किस तरीके से ये स्टार्टअप्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आसानी से चल पड़ेगा. एप्पल ऑलमोस्ट इट हैड गॉन बैंकरप्ट इन 97. आपको पता होगा स्टीव जॉब्स was fired from his own startup, from his own company. और इस तरीके से there are several examples. These are few examples which I have mentioned here. इसी तरीके से टाइम इसमें ऑलमोस्ट 12 बज गया है. अच्छा शर्मा साहब, क्या कितना वक्त है मेरे पास अभी? आप कंप्लीट कर लीजिए. ओके, फाइन, थैंक यू. ओके, आई विल गो लिटिल फास्टर. एंड इसमें एक जो मिथ है वो ये है कि नहीं साहब, वी नीड टू लुक फॉर गुड आइडियाज. कि गुड आइडियाज को जस्ट आप लोग एक एज ऑफ द कफ ऐसे ही आइडियाज देते रहते हैं एक दूसरे को. दैट इज आई थिंक इज ए मिथ, दैट आइडियाज ऑफ द कफ ऐसे ही लोगों को आप दे रहे हैं. वो गलत है. आपको बेसिकली इट इज ए वेल प्लान्ड सिस्टमैटिक रिसर्च एक्सरसाइज ऑफ फाइंडिंग आउट, डिगिंग आउट ए प्रॉब्लम, एंड देन टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम यू नीड आइडियाज. Story cannot start with the idea. It has to start with a great problem and then generating ideas to address those problems. So that way I have said that it is a myth कि आप जो है आइडियाज को ढूंढने निकल पड़े हैं और फिर एक स्टार्टअप बनना चाहते हैं. ये अप्रोच मुझे लगता है थोड़ा भ्रमित करने वाली है. और उसके बाद जो है कि आप ओवरनाइट प्रॉफिट कमा लेंगे, ये भी लोग सोचते हैं कि अब बिजनेस करना शुरू कर दिया. आजकल तो वैसे भी माहौल ऐसा है कि सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं स्टार्टअप शुरू करो. सभी लोग स्टार्टअप्स करते हैं. स्टार्टअप करेंगे तो एकदम से करोड़ों रुपया आना शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे. ये बात भी गलत है. और देखिए, मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूंगा कि स्टार्टअप में ये पेशेंस और ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है. आप इन 2 केस स्टडीज को पढ़िए. दैट इज ए क्रेड की जो केस स्टडी है, आपने इसको ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल. यू विल रियली लव वाचिंग दिस वीडियो, जो कि थिंक स्कूल का है, जिसमें कि क्रेड की ये बिजनेस मॉडल को दिया गया है. उसके अलावा जियो का केस स्टडी देखिए आप. इन्होंने कितने सिस्टमेटिकली प्लान करके अपने कस्टमर बेस को अपने साइड में लेके आए, कितने बड़े कस्टमर बेस को अपने पर उन्होंने एक तरीके से हैबिचुएट कर दिया अपने सिस्टम में,
और एक तरीके से इरिवर्सिबल एक चेंज ले आए। इस दरमियान उनको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन आज वो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ये सब ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार्टअप शुरू किया तो आपको 2 साल में कुछ ह्यूज प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे, नहीं। उसके लिए वो पेशेंस की जरूरत है, आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है। और एक बार अगर आप वो सही करते हैं, इफ यू आर रियली अंडरस्टैंडिंग द पल्स ऑफ योर कस्टमर, डेफिनेटली यू विल हैव बिजनेस, यू विल हैव प्रॉफिट, बट इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे वन। ये भी एक मिथ है जो कि लोग सोचते हैं। उसके बाद यू कैन डू इट ऑल योरसेल्फ, ये भी एक बात है जो इसके बारे में चर्चा तो हो ही गई है। लोग सोचते हैं कि सब में कई सारे लोग हैं, मीन्स जैसे कई सारे लोग कहते हैं को फाउंडर तो लेना ही लेना है। कई सारे लोग ऐसे भी है, नहीं यार सब मैं खुद करूंगा, किसी और को इन्वॉल्व क्यों करें, हमारा आइडिया कोई चुरा लेगा। ये सब भी एक बात है। मीन्स आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो आपके स्किल सेट को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप सोचते हैं आज की डेट में मेरे को कुछ इंटरनेट बिजनेस के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन अगर मेरा एक अच्छा को फाउंडर मिल जाए जो कि अच्छा एक्सपर्ट हो इसका इंटरनेट बिजनेस का, ऑब्वियसली ही कैन कॉम्प्लीमेंट माय स्किल सेट। आई विल हैव टू सी उसके बीच में बीच में तालमेल कैसा हो सकता है, मेरा स्वभाव कैसा है, टीम को कंट्रोल करने का उसका कैसा। अगर आप ये सब चीजें कर लेते हैं पहले, और अगर आप नहीं करते ये सब चीजों को प्रॉपरली, तो आपके स्टार्टअप के फेल होने का एक मेजर कारण हो सकता है, जो कि रिसर्च स्टडीज बताती हैं ये अक्सर ये कारण होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि सब मैं खुद ही कर लूंगा, या स्टार्ट से ये सोचे नहीं कोई दोस्त ढूंढ लूंगा, तो अप्रोच गलत है। आपको इसको साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा, मुझे कोई को फाउंडर चाहिए या नहीं चाहिए, या मुझे चाहिए तो किस टाइप का चाहिए। तो फिर उसके बाद है एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न दैट वे ओनली। अब लोग कहते हैं ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस कर लेते हैं, और वो खास टाइप के लोग होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। गलत है ये सोचना, क्योंकि जैसे मार्क जकरबर्ग का ये स्टेटमेंट जैसे मैं पढ़ रहा हूं इसे, इफ यू जस्ट वर्क ऑन द स्टफ दैट यू लाइक एंड यू आर पैशनेट अबाउट, यू डोंट हैव टू हैव ए मास्टर प्लान विथ हाउ थिंग्स विल प्ले आउट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर इज दैट if you are passionate about the work which you are doing, obviously तो कोई मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है, आपको चीजें अपने आप होंगी। आपको the only thing, आपको इंटरप्रेन्योर होने के लिए ऐसा नहीं है आपके लोग पैदाइशी इंटरप्रेन्योर्स होते हैं। आप अगर वो पैशन है आपके पास एक खास टाइप के काम करने के लिए, और वो एक साइकोलॉजिकल वो अर्ज है आपके अंदर उस काम के लिए, आप उसके देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज as long as you are passionate about your idea, you definitely cannot do it. And this is all the great entrepreneurs. आप उसको उनकी केस स्टडीज को पढ़िए, और आप बड़े बड़े entrepreneurs की आप देखिए how passionate they were about what they were trying to do. They even left Mark Zuckerberg, he left his college days during that time, and then he did what he wanted to do. So this level of passion is required. No, entrepreneurs are not born. They have to inculcate those traits, psychological traits. Then you need to be a school dropout. Quite often people say that जब भी स्टार्टअप के बारे में बात होती है, लोग अक्सर कहते हैं नहीं, स्कूल ड्रॉप आउट जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं वो बड़े अच्छे इंटरप्रेन्योर्स होते हैं। नॉट नेसेसरीली, स्कूल ड्रॉप आउट से उसका कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर पैशन फॉर योर वर्क। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये जो पीटर थियल के बारे में लिखा ना कि इवन यू इनकरेज पीपल टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल एंड क्रिएट, दैट इज नो समथिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। आप बहुत अच्छे क्वालिफाइड भी हो सकते हैं, आप नहीं भी हो सकते हैं। द ओनली थिंग इज दैट योर पैशन। एंड इनफैक्ट जो स्टडीज हैं वो कहती हैं कि इनफैक्ट पीपल ओवर 55 आर ट्वाइस एज लाइकली एज पीपल अंडर 35 टू लॉन्च हाई ग्रोथ स्टार्टअप। ये रिसर्च स्टडीज के ही रिजल्ट्स हैं। एनीवन कैन बी एंटरप्रेन्योर। ये भी एक टाइप की मिथ है लोगों के बाद लोगों की कोई भी कर लेता है ये काम। तो देखो दोनों चीजें हैं ना, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कोई भी कर लेता है, कुछ लोग सोचते हैं नहीं खास टाइप के लोग ही कर सकते हैं। तो ये भी एक मिथी हुई एक तरीके से कि कोई भी कर लेता है, कोई भी नहीं कर लेता, जब तक आपके अंदर उसके लिए पैशन ना हो। जैसे कि यंग फाउंडर्स कैन मेक इट बिग, ये जैसे कि फाउंडर की एज वाला ये ग्राफ मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का है। इट सेज दैट ओवरऑल द एम्पिरिकल एविडेंस शोज दैट द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स टेंड टू बी मिडिल एज्ड एंड दे आर नॉट यंग। आपको कुछ अजीब सा लगा होगा, लेकिन ये रिसर्च स्टडीज के दुनिया के सभी मेजर सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के बेस पर ये कह रहे हैं कि आज की डेट में जो है द एम्पिरिकल एविडेंस शोज दैट द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स टेंड टू बी मिडिल एज्ड। तो ऐसा नहीं सोचिए कि कोई स्कूल ड्रॉप आउट करके एकदम से अपना बिजनेस शुरू कर दे या कॉलेज से करके, इन चीजों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इट इज, आप सक्सेसफुल होंगे आप अगर आपके अंदर वो पैशन है उस काम के लिए। मैं जरा समराइज करके बता दूं, पैशन है, आप उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हैं, राइट टाइम पे उस आइडिया को आपने
लॉन्च किया है, आप सही प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। ज्यादातर लोग नहीं सक्सेसफुल होते, वो प्रॉब्लम ही गलत पकड़ते हैं, क्योंकि उनकी बात आइडिया को लेकर शुरू होती है, प्रॉब्लम के ऊपर कहीं बाद में आती है उनके। इसलिए फर्स्ट राइट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके राइट आइडिया जनरेट करो एंड देन डू इट। दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड नीड टू परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, कई पीपल थिंक दैट नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कोर्स कर लेना चाहिए क्या हमें कोई स्टार्टअप करने के लिए? नॉट नेसेसरीली। आप देखिए, मैंने आपको पहले तो alibaba.com में जैक मा के बारे में बताया। उन्होंने कौन सा किया? तो ही वाज इंग्लिश प्रोफेसर, ही हैड नॉट डन एनी कोर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ही इज सक्सेसफुल। कुणाल शाह के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो आप पढ़िए, वो ही इज ए ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर। और वो जो क्रेड के फाउंडर हैं, फ्री चार्ज का, ही वाज ए कॉलेज ड्रॉप आउट एंड ही नेवर कंप्लीटेड कॉलेज डिग्री। रितेश अग्रवाल का आप देख लीजिए, ओए रूम का फाउंडर। सम मैन देयर सेवरल अदर, स्टीव जॉब्स ले लिए, बिल गेट्स ले लिए। तो they had not done any course on entrepreneurship. But if you try to identify, नहीं, जब कॉलेज ड्रॉप आउट थे तो हम भी कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो अच्छा स्टार्टअप कर लेंगे, that is not true. The only thing is that see the kind of passion they had for doing what they did actually. That is the success story, their success story. फिर से वही बात आ गई, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। स्टार्टअप came only from big institution. लोग सोचते हैं IIT IIM करना होगा, not necessarily. All these people are not pass outs of IIT IIM. सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु हसल। देखिए, ऐसे लोग जो कि सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं। अब कई सारे लोग होते हैं कि नहीं, अपने स्टार्टअप के लिए उनको लगता है कि आज हमने बहुत काम किया तो आज हम जो है अब सक्सेसफुल होंगे, और अगर जिस दिन काम कम किया तो उनको लगता है कि नहीं, अब वी आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। नहीं, स्ट्रेटेजिकली आपने कितने आउटपुट दी, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर द सक्सेस इज नॉट रिजर्व फॉर दोज हु हसल द हार्डेस्ट। मींस वो सक्सेसफुल होते हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली प्लान करके मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। आप सुबह से, जब मैं नेट पे कहीं देख रहा था कि सुंदर पिचाई ही डजंट टेक वर्क टू हिज हाउस, मींस अपना काम, ऑफिस का काम ऑफिस में करके जाते हैं। तो दैट वाज जस्ट ए स्मॉल थिंग व्हिच आई एम मेंशनिंग। बट कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को आप देखिए, वो ये नहीं कहेगा कि आप कहेंगे अपने ऑफिस में जब तक बैठे हो आप काम वहां पर स्ट्रेटेजिकली प्लान कीजिए उसको। केवल इतना ही है कि आप पूरे काम में सुबह से शाम तक 24 घंटे लगे हुए हैं और लेकिन कुछ आउटपुट नहीं निकल रही है, उसका कोई मतलब नहीं। फिर क्या है कि आई हैव टू फोकस 100% ऑन माय स्टार्टअप फ्रॉम द डे आई फाउंडेड, दैट इज अगेन ए मिथ। आपको आई नीड टू सॉल्व पर्सनल। हाँ, कई सारे लोग सोचते हैं कि जो अगर जब तक आपने जिस सेक्टर में काम किया है, जिसमें जो आप कर रहे हैं उस सेक्टर में पहले का काम किया का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बात हेल्थ सेक्टर और बायोटेक कंपनीज के लिए सही है। जो ये इसमें आप देख लीजिएगा, ये लिंक से ही मैंने इस डेटा को लिया है कि 30% जो $1 billion स्टार्टअप्स हैं इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज में, प्रीवियसली only 30% of them had worked in the same industry and 40% of the founders of the $1 billion startups in the enterprise or SaaS space had worked in the same or the 40% had worked in the same industry before. तो मेन चीज क्या है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो ज्यादा मायने रखती हैं। जरूरी नहीं है आपको उसका एक्सपीरियंस, हेल्थ केयर और बायोटेक का तो खैर अलग बात है, लेकिन जो $1 billion स्टार्टअप्स है कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज में और 40% of the founders of $1 billion startups in enterprise or SaaS space had worked in the same industry. So rest of them obviously were successful even if they had not worked. And then competition is bad. Quite often people think that ये वाला आइडिया कहाँ यूज करेंगे, इसमें तो बहुत कंपटीशन है। जरूरी नहीं है, बल्कि कंपटीशन का ज्यादा होना एडवांटेजियस है। कई लोग ऐसा फील करते हैं और ये बात मेरी समझ से रियलिटी है कि आप ये देखिए कि कैसे फेसबुक इतना पॉपुलर हुआ। अगर कंपटीशन गलत होता तो कैसे इतने मेजर प्लेयर्स के साथ में वो compete कर पाते। 85% of the unicorns had competitors from the day one. This is what the data says. आप ये देखिए कि ये कंपटीशन होना अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास ना इतना सारा नॉलेज बेस, इतना सारा एक्सपीरियंस अवेलेबल होता है कि इन लोगों ने ऐसा 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 किया तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या है कि ये चीज आपके एडवांटेज में जाती है हमेशा। तो कंपटीशन इज नॉट बैड, इवन इफ देयर आर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यू कैन ऑलवेज वेंचर इनटू दैट कॉम्पिटिटिव स्पेस एंड बी सक्सेसफुल। Data says that 85% had competitor from the day one, unicorns का। Venture capitalists are your friends, that not true. People think that ये इसने तो मुझे फंडिंग किया है, मेरा दोस्त है। दोस्त नहीं है वो, आपका उसको अपना पैसा देखना है और उसको ये बात शुरू से, जो आपने पैसा लगाएगा उससे प्रोफेशनल रिलेशन होना चाहिए। वो आपका दोस्त नहीं है, he is looking for profits, so it should be absolutely a
नो प्रोफेशनल रिलेशन। इफ यू ओपन ए स्टार्टअप विद टैक्स लाइबिलिटी, आज अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम के तहत काफी सारे स्टार्टअप्स को कंसेशन दिए जा रहे हैं, ओनली स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बिजनेस विच आर प्रॉफिटेबल। ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एक केस स्टडी, कैलिफोर्निया गोल्ड रश वाली, ये बहुत ही पॉपुलर है, आप में से ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आप इसको देखिए जरूर। इसमें क्या हुआ कि 1800 समथिंग की बात है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड, बट देयर वाज कैलिफोर्निया में एक मिल का कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था और लोगों ने देखा कि वहां कुछ गोल्ड मिल रहा है, जो वर्कर्स थे, और सारे के ये बात इतनी वाइल्ड फायर की तरह फैल गई कि लोग दूर दूर से आके वहां से खोद के उसको गोल्ड निकालने की कोशिश करने लगे, और उनको मिला भी, और ये गोल्ड काफी बड़ी रूप में मिला। लेकिन वो जो केस स्टडी है वो जो बताती है हमें कि इस पूरे दरमियान पर जो लोग सबसे ज्यादा अमीर हुए, ये वो लोग नहीं थे जिनको गोल्ड मिला, ये वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे बिजनेस के दरमियान जो एसोसिएटेड जो चीज एक्टिविटीज थी ना, उससे रिलेटेड बिजनेस किए। जैसे फावड़ा या कुदाली जिन्होंने बनाई, वो अमीर हो गए। जैसे उस जमाने में जो जो लोग खुदाई कर रहे थे वो ना रफ एंड टफ टाइप के कपड़े पहनते थे, तो जो लेविस स्ट्रॉस जो कंपनी थी, जो आज इतनी इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने अपनी पहली जीन तब बनाई थी, वो तभी से शुरू किया उसने अपना बिजनेस, और वो उन्होंने उस कपड़े का बिजनेस किया, जो कि तो एसोसिएटेड जो आपके जो बिजनेसेस हैं, जो उससे कनेक्टेड जो एसोसिएटेड बिजनेसेस हैं, उन पर उन्होंने हाथ डाला। और बैंकिंग सेक्टर में दुनिया भर की ऐसे एसोसिएटेड एरियाज जिसमें कि फूड जो कि सप्लाई करते थे इन लोगों को, जो कि वहां पर लगे रहते थे। आप ये देखिए, ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है, उसमें लाखों की संख्या में लोग आके उस साइट में आके सुबह से शाम तक खोद के ना सोना निकालने की कोशिश करते थे। आप इसकी केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी, एंड व्हाट यू विल फाइंड एंड द बिगेस्ट मैसेज व्हिच वी गेट फ्रॉम दिस केस स्टडी इज दैट कोई ये मत सोचिए कि ये सारी भेड़ चाल मत कीजिए। ये मेरा कहने का मतलब है कि आपने कहा कि इस फील्ड में बहुत पैसा है, नहीं। आप ये देखिए, इससे एसोसिएटेड बिजनेसेस कौन से नए नए क्रिएट हो रहे हैं, उसमें आपको वेंचर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज ड्यूरिंग गोल्ड रश, इट इज ए गुड टाइम टू बी पिक एंड शॉवल बिजनेस। इसलिए मार्क ट्वेन के जो स्टेटमेंट है इंटरेस्टिंग है। एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप मींस more personal time, not necessarily, and then your friends and families will support you. That again is a myth. लोग कहते हैं कि हमारे घर वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या वो कभी कहते हैं कि नहीं घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। That has nothing to do with your family supporting you. Quite often it is likely people will, most likely your family will try to kind of make you understand that नहीं नहीं ये करने की जरूरत नहीं है, रिस्की है, मत करो, और एक कोई जॉब ले लो। आप इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो है, वो मैंने यहीं पर लिखा हुआ है। इसको ये आईआईटी का है, विकास बराई करके इनका टेड टॉक है, इसको आप पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि किस तरीके से वो उसने अपना बिजनेस खड़ा किया एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज फैमिली इन दैट। एंड दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, व्हिच यू मे लाइक टू व्यू। थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया और आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। प्रोग्राम थोड़ा मुझे लगता है कि 1 ही घंटे का पूरा प्रोग्राम है, और जो मैंने बातें कही उस पर अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। Are there any questions on the Facebook, and are there any visitors there? And if they are not, and later on if they watch this video, we will answer their queries there also. And if there are administrative queries also from the students, which quite likely they will be there, my request, my colleague Dr. Anshuman, to please respond to such queries. Thank you very much, Dr. Momita and Director NCID O.P. Sharma sir, for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Pandey, for that wonderful talk. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं और आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली उनका उत्तर आप दें। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है श्रवण चतुर्वेदी से। वो जानना चाहते हैं कि आपने कहा है कि स्टार्टअप के लिए इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज की आवश्यकता होती है, कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी को इनोवेटिव कहा जाएगा? देखिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, किस चीज को आप इनोवेशन कहेंगे, ये बात आपको
मैं एक बार बताऊं, ऐसा कुछ आपको कोई एक प्रेस्क्रिप्शन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये साहब इनोवेशन ये चीज है। आप किसको इनोवेशन कहेंगे? सब फॉर इंस्टेंस, अगर आपका एक बिजनेस है और आप उस उसमें एक चेंज करना चाहते हैं, ऑब्वियसली इफ इट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, it can bring more profit into your business, it can make your operations more efficient, obviously that is a innovation for you। ठीक है, इसी को आप इनोवेशन कहेंगे। आप देखिए इनोवेशन कोई भी चीज हो, देखिए दायरे से हटके आप कोई भी काम करें तो आप ही कह सकते हैं कि ये साहब एक नवाचार है, लेकिन नवाचार किसको कहेंगे? वो नवाचार होगा जो आपका पर्पस सॉल्व करता है, जिस पर्पस के लिए आपके स्टार्टअप शुरू किया गया है। तो अगर आप, मैं कहूंगा छोटा सा, माना आपका एक ढाबा है, ट्रेडिशनली वो एक छोटा किसी का बिजनेस है, और वो छोटा सा एक दायरे से हटके एक छोटे से एक नया काम करे, लोगों के घर में फूड डिलीवरी कर ले फॉर इंस्टेंस, है ना, लोगों से फीडबैक ले कि आपको किस टाइप की चीज चाहिए वहां पर। फॉर इंस्टेंस मेरे दिमाग में जैसे एक बात आ रही थी कि अगर जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं आजकल बहुत सारे, और अच्छा टेस्टी फूड उनको नहीं अवेलेबल होता, और जनरली उन लोगों को हमेशा ऐसे फूड से संतोष करना पड़ता है जो कि विच इज नॉट वेरी टेस्टी। अगर कोई एक व्यक्ति एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करता है जो कि पीपल दे कैन प्रिपेयर सच टेस्टी एंड गुड क्वालिटी फूड फॉर से डायबिटिक पेशेंट्स, there will be a lot of demand for such kind of food, and if you can deliver it in their houses, ये थोड़ा दायरे से हटके करने वाली बात हुई ना, तो थोड़ा सा आपके मोर कस्टमर बेस हो गया, और आपको अपने पर्पस तक आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिल गया। मेरे समझ से ये एक आपने इनोवेशन ही किया है। आपको कोई भी इनोवेशन छोटा से छोटा भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। केवल मैं ये कहूंगा, आपके स्टार्टअप का पर्पस सॉल्व करने के लिए उसकी जो लीक से हटके आप अगर कुछ नई चीज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर, स्ट्रेटेजिक फेरबदल करते हैं, वो आपके इनोवेशन के दायरे में ही आता है। किस चीज को आप इनोवेशन कहेंगे, और वो आपके कंटेक्स्ट पर डिपेंड करेगा, वो आपका किस कंटेक्स्ट में आप काम कर रहे हैं, और उसी कंटेक्स्ट में वो इनोवेशन कहलाएगा। यस, थैंक यू डॉक्टर पांडे। हमारे पास कुछ 7-8 सवाल हैं, तो बस दूसरा सवाल ये है सुषमा उपाध्याय का। द MySpace could have easily copied the strategies of Facebook in order to survive. Why did they not do it? What was the problem in using the same strategy? Good. That is a very good question, and I must compliment this person who has asked this question. देखिए MySpace का वो ग्राफ में दिखा रहा था जो कुछ समय पहले, उनके पास कितने 10 बिलियंस के आसपास उनके यूजर्स हो गए थे, और एकदम से कम होने शुरू हो गए। MySpace एक बहुत बड़ा रोल प्लेयर था, एक बिजनेस प्लेयर था जब फेसबुक आया था। वो उसी जमाने में वो MySpace को एक बड़े मीडिया जायंट ने खरीद लिया। उनको पता था उस मीडिया कंपनी को कि ये आज नहीं तो कल जो है सोशल मीडिया जो है बहुत ही पॉपुलर होगा बिजनेस के लिए। तो वो मीडिया कंपनी एक बहुत, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, बट यू कैन व्यू दैट वीडियो व्हिच आई हैव सजेस्टेड इन दैट पावर पॉइंट। वो मीडिया कंपनी बड़ी थी, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर था, उनका मेन फोकस किसी और डायरेक्शन में था, ये उनका एक छोटा सा एक नया उपक्रम था, और उन्होंने ये सोच के, उनके यहाँ डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली उनके लिए डिफिकल्ट हो गई। दिस इज व्हाट आई हैव रेड थ्रू द केस स्टडीज। उनको ये एक बात है कि कोई नई चीज वो कर सकते थे, लेकिन यही डिसीजन लेने में उनको वक्त लग गया, और तब तक हम फेसबुक के यूजर्स काफी बड़ी संख्या में शिफ्ट हो गए थे, और ये एक बिलियन ऑर्डर के इनके यूजर्स हो गए थे, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू टेक देयर यूजर्स बैक। तो ये एक काफी एक इम्पोर्टेंट चीज जो थी, अगर आप ये जो थी, और ये इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि सही बात है MySpace तो इतना बड़ा कंपनी थी, और फेसबुक तो इमर्ज ही हो रहा था, तो वो इजीली ये भी कर सकते थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग, वो मैंने अपने पावर पॉइंट में लिखा भी है, डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत स्लो हो गई थी। और क्योंकि ये एक छोटी टीम थी फेसबुक की, इनके छोटी टीम थी, और इनके लिए डिसीजन लेना आसान था, इनोवेशंस करना आसान था, इमीडिएटली कस्टमर्स की डिमांड के लिए रिस्पॉन्ड करना आसान था, और उनकी माइक्रो लेवल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जितनी फास्ट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती थी, वो करने की आवश्यकता थी, वो ये लोग बहुत आराम से कर लेते थे। ये एक मेजर। तो व्हाट वी सी हियर इज दैट idea was the same, the only thing is that its execution and its fast decision making and its business model, these things tends to take precedence over basically the uniqueness of the idea, which people think that if the idea is unique, everything is possible. To my mind, it is not
true, uniqueness of idea matters, but at the third point, main is the Yeah. education. And that's why the Facebook possible this MySpace, despite being such a strong role player in the market, they could not do it. एंड आप इसके लिए वीडियो जरूर देखिएगा, और मैं कुछ समय बाद देखूंगा ये वीडियो में किन किन लोगों ने कमेंट्स दिए हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं, मैं वहीं पर जवाब भी दे दूंगा। वो उनके जो लिंक्स हैं वो वहां पर पेस्ट कर दूंगा, ताकि आपको रेडी रेफरेंस के लिए मिल जाए। पावर पॉइंट से तो आपको उनको शायद वो लिंक नहीं मिल पाएगा, वो कॉपी नहीं हो पाएगा। तो आई विल राइट देम। जी So all those students who have asked these questions, I will definitely write them. तो या जिन्होंने पूछा डॉक्टर है पांडे हम्म, जी, देर आर इनफैक्ट सच में देर आर क्वेश्चंस लाइक नोकिया फेल क्यों हुआ, या बूटस्ट्रैपिंग क्या है, या कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है, इस तरह के जो सवाल हैं वो तो मैंने हम वो बता दिया। डेफिनेटली फेसबुक इनफैक्ट पे दिया जा नोकिया सकता वगैरह, है। नोकिया की केस जी स्टडी तो लोगों ने देखा ही है कि नोकिया जी क्यों फेल हुआ। देयर आर अराउंड जी 6 regions, very strong regions, which made them fail actually. And I have written a link also there, and if they can view it. And but the most important factors जो कि मैंने उस स्लाइड के कंटेक्स्ट में लिखा था, वो यही था कि नोकिया ने एक्चुअली ना अपने टाइमली वो, एक तो उन्होंने पहली चीज ये मुझे लगता है ये सोची कि जो यूजर है, नहीं जो डिजाइनर है पूरी स्ट्रेटेजी का, वो सब कुछ जानता है नहीं। उन्होंने हार्डवेयर पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया, सॉफ्टवेयर पार्ट पे नहीं फोकस किया। उस वक्त ये डिमांड ज्यादा थी कि आपके उनको प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए था अपना एंड्रॉइड बेस्ड, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर पाए। और उनके अल्टीमेटली वो कंपनी कितनी मिजरेबली फेल हो गई। वन कंपनी विच कुड हैव डन इट वेरी इजीली, just because of their strategic lapse in their part, they could not do it. And this, the viewers who have raised this question, they should read a proper video on this, on the Nokia case study, on the Think School, which is जिस Think School का मैं लिंक फिर से लिख दूंगा यहाँ कमेंट्स में। आप उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, और जो बहुत अच्छे वीडियोस हैं, गणेश प्रसाद करके उनके वीडियो हैं, अंकुर वारिकू की बहुत अच्छी केस स्टडी हैं। ये लोग हैं जो कि यंग हैं, जनरेशन के लोग हैं, और इन्होंने अच्छे अच्छे वीडियोस डेवलप किए हैं, और आपको बहुत अच्छे लगेंगे मेरी समझ से। कोशिश करेंगे हम जी एंटरप्रेन्योर्स को जी डॉक्टर पांडे, सीआईडी के साथ एक्चुअली मैं बुला रहे मुझे लगता है हैं। जी, मुझे लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सवाल किया है, सुषमा उपाध्याय, वरुण पांडे और श्रवण चतुर्वेदी, इनका जवाब कुछ मिल गए हैं, और कुछ डॉक्टर पांडे दोबारा से दे देंगे फेसबुक के पेज पे। जी, मैं फेसबुक के लास्टली डॉक्टर पांडे, एक डॉक्टर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन और सवाल हैं डॉक्टर मनोज दास के, मैं क्विकली जरा पढ़ देना चाहती हूँ। Dr. Dash कहते हैं कि can I request to explain what exactly startup means, in what way it would help our IGNOU learners for their teaching learning process? Can we, meaning teachers, academic counselors, help them to take up similar topic for their project, dissertations, etc., to make them understand the concept and learn? Can we help our learners to get funding agencies for initiating similar type of projects or study related stuff to startups for their dissertations to learn this concept? Okay. And lastly, can I request to share similar projects or studies, any made by students as a case study, sharing of experiences with the learners and academic learners? ओके Thank you. ओके 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 मिस्टर दास, में उनकी बात का जवाब दे दूं। वो देखिए, एनसीईआरटी तो बहुत कुछ काम कर ही रहे इस डायरेक्शन में। मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टअप्स के को पॉपुलराइज करने के लिए एनसीईआरटी has taken several initiatives. All these students can take benefit of it. मुझे लगता है कि very soon in IGNOU we'll be having a very strong such support system for the students, and they can definitely take benefit of it. मुझे लगता है कि डायरेक्टर एनसीईआरटी may like to say something more on this. So I will see, and queries of all those students which I have not answered, and I have not seen them actually. The Facebook is not in front of me, so I will write my comments on the Facebook, and I will give them guidance to all such questions who have raised questions on my presentation. I will keep a watch on this program over some time, and then I will go on answering those queries. Thank And you very much. I had sent that Facebook link to students who are new, freshly admitted students. Some students are around 2,000 students. I don't know how many of them have viewed it. Anyway, yes. Yeah. Thank you very much, Dr. Pandey. And now I would like to request our listeners here
If they have any comments or suggestions or observations, please. Yeah. Dr. Jyotsna, would you like to say anything? Yeah, indeed, it was a very good presentation. और पांडे जी, लोग स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन स्टार्टअप के दर्द की बात आज तक किसी ने नहीं की। हमने बहुत सारे सेशंस करवाए, लेकिन जो एक्चुअली स्टार्टअप्स का दर्द है ऑल ओवर द वर्ल्ड और क्यों वो फेल हो रहे हैं उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो प्रेजेंटेशन था वो मतलब एक सागर के समान है। उसमें इतनी आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया इतने छोटे से समय में, और उसको केस स्टडीज और वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू इंग्लिश यूज करते हुए बताया है। ये बड़ा ही अच्छा लगा। और हम मुझे इससे ये आइडिया आया कि हमारा ऑलरेडी जो स्टार्टअप के लिए स्कीम चलते हैं, तो आपने ये जो एक प्रेजेंटेशन नटशेल में दिया है, इसको थोड़ा हम लोग एलैबोरेट करके हमारे जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आइडिएशन स्टेज पे हैं, बहुत सारे हैं जिनके प्रोटोटाइप बने हुए हैं, बहुत सारे हैं जो फंडिंग को देखते हैं, कुछ हैं जो जिनके बिजनेस प्लान भी बने हुए हैं। तो उनको हम कैसे फैसिलिटेट फर्दर कर सकते हैं और स्टार्टअप वो कैसे अपना सक्सेसफुल बना सके, उसके लिए हम कुछ काम जो कर सकते हैं वो निश्चित रूप से मैं शर्मा जी की यहाँ पे परमिशन चाहूंगी कि अगर हम लोग इस दिशा में काम करें। और साथ में ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स ने इतने सारे प्रश्न पूछे, बूटस्ट्रैप क्या है, स्टार्टअप क्या है, ये तो उनका हमारा जो नवरीति पोर्टल है उसमें एक पूरा एक रिपॉजिटरी अगर हम इस इन कॉन्सेप्ट्स के और इन चीज़ों की बता सकें, क्योंकि चूंकि आपने बहुत सारा ऑलरेडी रिसर्च की कर लिया है, आपके पास बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अगर हम उसको वहां पे डाल सके तो जो स्टूडेंट्स आज देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और जो स्टूडेंट्स उस पोर्टल को विजिट करते हैं वो भी जब चाहें तो उन लिंक्स को देख के और फायदा उठा सकते हैं। तो जी। मैं तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका प्रेजेंटेशन सुन के। और मैं यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था, लेकिन मैं बहुत बारीकी से एक एक चीज सुन रही थी। और हमेशा जैसे आपका होता है, यू स्पोक फ्रॉम द हार्ट, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि जिन जिन भी हमारे स्टूडेंट्स ने सुना है, ये आपकी सारी बातें उनके दिल तक पहुंची हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी इन चीज़ों को देख के समझ के वो ज़रूर मोटिवेट होंगे कि अगर उनको अपना स्टार्टअप करना है तो उनको किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, एंड थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू। Thank you, ओके। Dr. Jyotsna. थैंक यू ज्योत्सना। मुझे ये भी लगता है कि जैसे इस सीरीज में हम लोग ना केस स्टडीज के जरिए इन स्टूडेंट्स को बहुत कुछ एक ही स्टडी में एक केस स्टडी क्या होता है, वो अपनी काफी एक इंटीग्रेटेड पूरा एक कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो। तो अगर अलग अलग चीजों की केस स्टडीज की एक सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको अगर हम पीसेज में अलग अलग बताएं तो इससे अच्छा है कि हम उनको केस स्टडीज बताएं, तो उनको सारी चीजें उससे संबंधित एक ही साथ समझ में आ जाएंगी। ये काफी अब आजकल तो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में भी केस स्टडीज के जरिए पढ़ाई होती है, तो मुझे लग रहा है वो भी एक अच्छा आइडिया है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहें। थैंक यू वेरी मच एनसीईआरटी फॉर टेकिंग सच ए वंडरफुल इनिशिएटिव। और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में इफ मीनिंगफुली वी कैन कंट्रीब्यूट मोर ऑन दिस, सो आई विल बी हैप्पी। जी डॉक्टर पांडे, और किसी को कुछ कमेंट्स करने हैं, कोई ऑब्जर्वेशन? आई वुड लाइक टू इनवाइट, अगर कोई और कुछ कहना चाहेगा। Looks like there's nobody now. So I would now request Dr. Sharma to. चैट बॉक्स में एक रजनी गौतम, ये हमारी एकेडमिक काउंसलर है, वन ऑफ वेरी एक्टिव जी academic, जी and she जी is जी written that how our students can get benefited by IGNOU's startup. She actually teaches in a college here where we have a study center, and she has written that how their students can get benefited by IGNOU's startup initiative. So while Dr. Sharma will be making his observation, I just request him to uh, comment on that also, please. Thank जी you डॉक्टर very शर्मा much. प्लीज। या Thank you very much, डॉक्टर पांडे जी। इनफैक्ट जो प्रेजेंटेशन रहा है
बहुत सारे केस स्टडीज के साथ में और उनके माइक्रो लेवल एनालिसिस के साथ में आपने जो एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है, आई थिंक बहुत क्लैरिटी देगा हमारे उन स्टूडेंट्स को जो स्टार्टअप की तरफ जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपने कवर किए हैं, चाहे वो टाइमिंग का हो या एग्जीक्यूशन का हो, या अगर हम उसकी बात करें कि उसका बिजनेस मॉडल किस तरीके का है, फंडिंग से रिलेटेड, या हम टीम की बात करते हैं, हम अपना इंडिपेंडेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी जो मिथ्स सी होती हैं, क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है बच्चों के दिमाग में। हम डिफरेंट सेशंस में देखते हैं वो इस तरीके के सवाल पूछते हैं, जो आपने अपने एक सवाल के रूप में उनका जवाब दिया और विद एग्जाम्पल्स। और ये केस स्टडीज वाला जो आपका जो कंसेप्ट आइडिया जो दे रहे हैं, आई थिंक बिकॉज दिस फ्राइडे सीरीज इज टू बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, तो इसमें हम जरूर ये कवर करेंगे, एक एक केस स्टडी को लेकर के उनकी सारी निटिग्रिटीज को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ कहाँ उनको सक्सेस हुए, किन से कंपटीशन किया, किस तरीके से अगर फेलोर भी है तो कैसे फंडिंग हुई उनकी, हाउ दे सर्वाइव्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस दे वर फेसिंग एंड हाउ दे कुड ओवरकम दोज ऑल चैलेंजेस। ये करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स की क्लैरिटी और ज़्यादा क्लियर होगी। और जहाँ तक अब डॉक्टर अग्नि गौतम का सवाल है, हम अपने इग्नो स्टूडेंट्स के लिए तो ये कर ही रहे हैं। बेसिकली दिस प्रोग्राम फ्राइडे सीरीज itself is focusing on that, creating awareness about the innovation in startup and giving all kind of information, all kind of knowledge, all kind of support to our students. And in addition to that, जो और हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वो इग्नो उद्यमी की बात हो या आइडिया टू स्टार्टअप स्कीम की बात हो या बिजनेस प्लान डेवलपमेंट कंपटीशन की बात हो, इन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को हम स्टार्टअप की तरफ में मोटिवेट कर पाएं। और मोटिवेट करने के साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि हाउ वी कैन प्रोवाइड देम रिक्वायर्ड काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑल्सो। तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम टू टाइम एक पैकेज्ड फॉर्म में हम स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने इग्नो उद्यमी के थ्रू जिन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, वी हैड आस्क्ड देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि कौन कौन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो उनके लिए हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, दैट इज फोकसिंग ऑन द मोटिवेशन एस्पेक्ट ऑन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद में नेक्स्ट होगा, दैट विल दी नेक्स्ट लेवल एंड देन फर्दर नेक्स्ट लेवल। तो ताकि जो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपने आइडिया को किस तरीके से कल्टीवेट करते हैं और कैसे हम उनको हेल्प कर पाते हैं टू कन्वर्ट देयर आइडिया इनटू दिस स्टार्टअप। सो दिस सीरीज वी आर स्टार्टिंग एंड ऑल अदर प्रोग्राम्स, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले और वो स्टार्टअप की तरफ में कहीं आगे बढ़ें और अपना सक्सेसफुल स्टार्टअप भी सेटअप कर पाएं। और आज का प्रेजेंटेशन तो आपने बहुत सारे उनके उन क्वेश्चंस का जवाब दे दिया जो नॉर्मली उनके दिमाग में रहते हैं और जो नहीं पूछ पाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट भी है। आज का सेशन मुझे लग रहा है कि सबसे लंबा सेशन भी रहा होगा। इट हैज बिकम मोर देन 1.5 hour because of your that good presentation and number of questions which our students have given on Facebook and even here also we can see. So thank you very much for sparing time and giving such a wonderful presentation for our students and I hope अब हमें ये जो आप केस स्टडीज पे जिन्होंने जो आपने बहुत सारा रिसर्च किया है, I will request you to prepare some case study wise presentation so that will be more focused also on the sectors, different sectors covering that will be good thing for us. So thank you very much to you and all our participants and all our students who have joined us through Facebook Live. Now over to you, Dr. Momita. Thank you, Dr. Sharma. So this brings us to the end of today's session. R.C. Vishakhapatnam wants to say something. Okay, so let us wind up today's session then. At the outset, I'd like to thank you, Dr. Pandey, for that thought-provoking session. Indeed, our students who are aspiring to set up their startups would be highly benefited and motivated from your talk. I thank all the directors and heads, regional directors, faculty members, and academics of IGNOU for attending today's session.
I thank Mr. Rajesh Sharma, Head of the Public Information Unit, for providing NCID with the Facebook Live platform and ensuring the smooth conduct of the session with utmost dedication. I thank Dr. Upi Sharma and my colleagues, Dr. Jyotsna Dikshit and Dr. Sujata Santosh, for their untiring support. I thank Mr. Pawan for extending his assistance in the smooth conduct of these programs. So this brings us to the end of today's session. Hope to see you next week. Till then, namaste. Thank you. Thank you very much. Namaskar. Okay. Thank you very much. Thank you, sir.